कि इस देश में जितने भी लोग काम की तलाश में गुजरात के लोग मध्य प्रदेश में आते हैं और मध्य प्रदेश के लोग गुजरात में आते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि काम की तलाश में ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के लोग गुजरात में आते और गुजरात के लोग मध्य प्रदेश में नहीं आते। लेकिन ये एक घटना है और घटना बहुत दुखद है और सरकार इस पर बहुत गंभीर है। गुजरात में ये घटना पहली नहीं हुई, इसके पहले राजकोट में हुई, मोरबी में हुई। आप कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई होगी एकदम कड़क होगी, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि ऐसी कोई दुर्घटना ही न हो? इसके ऐसा नहीं हो सकता था? 21 लोगों की जान। देखिए, सरकार लगातार प्रयास करती है। कोई भी सरकार या आप और हम इस प्रकार की घटना घटे कोई नहीं चाहता, लेकिन घटना घट गई है और उसमें सरकार बहुत गंभीर है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप इसमें कहना है कि पूरी तरह इसमें राजनीति की जा रही है और मजदूरों के साथ कोई भी संवेदना नहीं दिखाई जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में मुझे कोई बोलना नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जो परिवार हैं जिनसे आप मिले हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? किस तरीके की उनकी मानसिक स्थिति आपने देखी? देखिए, मैं अभी जस्ट परिवार के लोगों से मिला, क्योंकि मैं स्वयं भी रात को 3 बजे पहुंचा हूं जी। और अभी परिवार के लोगों से मेरा बातचीत हुई है। उनको हमने भरोसा दिलाया है कि सरकार आपके साथ है ना, सरकार साथ में, आप चिंता ना करें, ये हमने भरोसा दिया। ओके। ડીસામાં ગઈકાલે જે દુર્ઘટના બની હતી, ડીસામાં ગઈકાલે જે દુર્ઘટના બની હતી અને ખાસ કરીને મૃતકોમાં મોટાભાગે મધ્યપ્રદેશના દેવાંશ અને હરદા જિલ્લાના મૃતકોનો સમાવેશ થતો હતો. ગત મોડી રાતે મધ્યપ્રદેશ જિલ્લાના મંત્રીશ્રી, ત્યાંથી સરકાર તરફથી નિમાયેલા ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને જે મૃતકો છે એમના પરિવારજનો પણ અહીંયા આવ્યા હતા. અત્યારે સવારે તમામ જે ડેડ બોડી છે એમની પરિવારજનો અને લોકલ મધ્યપ્રદેશ ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનની હાજરીમાં આઈડેન્ટિટી વેરીફાઈ કરાવી અને 10 જેટલા જે મૃતદેહો છે એને એમ્બ્યુલન્સ મારફત દેવાંશ જિલ્લામાં મોકલવા માટે, એમના મૂળ વતન મોકલવા માટે રવાના કરવામાં આવ્યા છે. અને ટૂંક સમયમાં જે બાકીના હરદા જિલ્લાની લોકલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન ટીમ અહીંયા ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવી જાય ત્યારે બાકીના જે 8 મૃતદેહો છે એમની પણ ઓળખની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી તમામ મૃતદેહોને એમ્બ્યુલન્સ સાથે તેમના મૂળ વતનમાં મોકલવા માટે રવાના કરવામાં આવશે. સર, હિન્દી.